Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students and respected teachers, welcome back to my channel NPS Official. How are you kids? How are you all? Fine, that's great. Here we are, another interesting informative video that helps you how to write letters, sounds on 4 lines. So watch the video till end. You will get the complete information about how to write letters or sounds on 4 lines. Let's start. अब हम राइट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम राइट करेंगे ए की फॉर्मेशन भी आपने देखनी है कि मैं किस लाइन से स्टार्ट करूंगी, किस लाइन पे ख़त्म करूंगी, और जो मैं लैंग्वेज यूज़ करूंगी उससे भी आपने नोट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें राइट करना है ए। फर्स्ट लाइन से हमें स्टार्ट करना है डाउन डाउन अक्रॉस ए, डाउन डाउन अक्रॉस ए। अब राइट करेंगे हम ए, राउंड अप एंड डाउन, और ये सेंटर वाली 2 लाइन्स पे मैंने राइट किया है ए, राउंड अप डाउन ए। अब राइट करूंगी बी बा, डाउन राउंड अगेन राउंड बी। अब राइट करूंगी ब, बी जो अपर वाली 3 लाइन्स पे राइट किया है, बा भी मैं 3 लाइन्स पे राइट करूंगी। स्टे डाउन अप अराउंड ब, बी ब, ए बी ब। अब सी राइट करेंगे, सी पे वाली ऊपर वाली 3 लाइन्स पे हमने राइट करना है। स्टार्ट फ्रॉम देयर, राउंड एंड स्टॉप। ऊपर वाली 3 लाइन्स पे राइट किया, राउंड एंड स्टॉप। और का राइट करेंगे सेंटर वाली 2 लाइन्स पे, राउंड एंड स्टॉप क, ए बी ब सी क। अब हम राइट करेंगे डी डा। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, डाउन अप राउंड डी। अब डा राइट करेंगे, राउंड ऑल द वे अप एंड डाउन ड, डी ड। क्या राइट किया है, डी ड, ए बी ब सी क डी ड। अब राइट करेंगे ई, डाउन along cross along। फिर देखें, स्टे डाउन along क्रॉस along। अब हमने राइट करना है ई, इसके साउंड along एंड राउंड, 2 लाइन्स में along एंड राउंड ई ए, then B ba, then C ka, after that D da and E। अब राइट करना है हमने F। क्या राइट करना है, F। स्टे डाउन along F, स्टे डाउन along and along F। फॉर राइट करेंगे अब हम, turn and down across F। What comes after F? Read again, A B ba C ka D da E F and then G g। How to write G? Round and stop, then across, round stop
देन अक्रॉस। अब हमने राइट करना है ग, राउंड, अप, डाउन एंड टर्न। नीचे वाली 3 लाइन्स पे आपने राइट किया है ग, और जी राइट किया है ऊपर वाली 3 लाइन से। राउंड, स्टॉप, अक्रॉस, जी, राउंड, अप, डाउन एंड टर्न, ग, जी, ग। आफ्टर दैट हमें राइट करना है एच, हा, स्टे डाउन, अगेन डाउन, across, edge, down, down, across, edge. Then अब राइट करेंगे हम हा, ऊपर वाली 3 लाइन से फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, और ये 3 लाइन्स पे आपने राइट करना है। डाउन, अप एंड डाउन, ह, एच, ह, ए, बी, ब, सी, क, डी, ड, ई, एफ, जी, ग, एच, ह. What comes after H? I, E. Stay down, tiny line above and tiny line down, I. 3 लाइन्स पे हमने राइट किया है I. अब इसका साउंड राइट करना है E. Stay down, dot above. Stay down, dot above. A, B, B, C, K, D, D, E, F, G, G, H, I, E. I, E के बाद हमने राइट करना है J, J. How to write J, J? ऊपर वाली 3 लाइन्स पे हम राइट करेंगे डाउन एंड टर्न, डाउन एंड टर्न, अक्रॉस, डाउन, टर्न, अक्रॉस। ऊपर वाली 3 लाइन्स पे हमने राइट किया, अब हम राइट करेंगे ज, डाउन एंड टर्न, डॉट अबव, ज, डाउन एंड टर्न, डॉट अबव, ज, जे, ज, जे, ज। जे जा के बाद हमें राइट करना है के, ख, डाउन, stay down, across and down, के ऊपर वाली 3 लाइन्स पे राइट किए। अब राइट करना है ख, stay down, और सेंटर वाली 2 लाइन्स पे हमने क्रॉस करना है, देन डाउन, ख, के, ख, ए, बी, ब, सी, क, डी, ड, ई, एफ, जी, ग, एच, I, E, J, J, K, K, and after that L. Stay down, across, stay down, across, down and turn, L, down and turn, L. प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी राइट किया है ए से L तक, ठीक है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कैसे इसको राइट करना है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, और हम जब बच्चों को काम करवा रहे होते हैं इसमें क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।